Another factor that we can take into account in order to maximize the expression of our cloned DNA is to control or to optimize the translational initiation. Although the strength of promoter it is very essential. कि promoter जो है it is the main force or the main segment of the DNA जो कि रोल प्ले करता है in order to get the high expression of the target gene. लेकिन इसके अलावा जो क्लोन डीएनए है उसका जो न्यूक्लियोटाइड बेस का जो स्ट्रक्चर है या स्पेशली उसकी जो केमिकल जो अरेंजमेंट है वो भी बड़ी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट द हाई एक्सप्रेशन और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस की अरेंजमेंट है वो एक्सप्रेशन को जो है वो डाउन डाउन रेगुलेट या अप रेगुलेट कर सकती है. तो इसमें जो सेंट्रल रोल है वो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस का है. एज आई टोल्ड यू दैट ST sequences they are present upstream of the start codon that is AUG mainly on the messenger RNA. And this ST sequences it is complementary to the 3' end of the 16S ribosomal RNA. You have the idea that ribosomes may contain different type of RNAs like 16S ribosomal RNA, 5S ribosomal RNA or even 23S ribosomal RNA. तो जो 16S ribosomal RNA है वो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट में होता है और ये जो मैसेंजर आरएनए है उसकी बाइंडिंग जो है राइबोसोम के साथ उसमें रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ इट्स 3' एंड विद द 5' एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए. ये कैसे जो है एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है स्पेशली जो एसटी सीक्वेंसेस हैं. सपोज कि अगर इसका सीक्वेंस जो है it is GGAGG at the 5' end, and if there is single base pair changes there, then the expression it may be down regulated maybe up to 20-fold. So this may be the importance of the base pair arrangement of the ST sequences, that is single base pair change from GGAGG then the expression may be down regulated up to 20 folds. इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइड की बेसिस हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, चाहे वो अपस्ट्रीम है AUG कोडॉन के या डाउनस्ट्रीम है, तो वो भी टारगेट जो DNA है उसका एक्सप्रेशन जो है उसको मीडिएट करती है या इन्फ्लुएंस कर सकती है. मिसाल के तौर पे अगर AUG कोडॉन के अपस्ट्रीम जो बेसिस हैं अगर वो GAG है या सपोज करें कि CUU है तो एक्सप्रेशन इट मे बी हाई, बट इफ इट इज़ चेंज टू UUC or otherwise then expression again may be down regulated. Similarly, the presence of different bases after the start codon that is AUG they can also influence the expression of the target gene. यहाँ हम अल्फा इंटरफेरॉन जो है ह्यूमन की विच इज़ अ प्रोटीन हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि अगर जो फोर्थ बेस है नॉट फोर्थ बेस रादर फोर्थ जो कोडॉन है अगर उसकी थर्ड बेस पेयर चेंज हो जाए तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो वेरिएबल हो सकता है. अल्फा interferon of human. It means that if from the AUG codon, the fourth codon, third base pair, it is changed, then the expression, it may be 50 times variable. And on the other hand, if some specific type of bases are there, like for lysine AAA or GCU bases, or triplet code is there for other amino acid, then the expression it may be upregulated. So we can say that the initiation of translation it is also one of the determining factor
that can control the expression of the foreign DNA fragment.